आज हम पोटैटोस ऑनियन स्टिर फ्राई रेसिपी बनाते हैं। मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरी मॉम इन लॉ जो भी ये रेसिपी टेस्ट करता है, सब पूछते हैं व्हाट इज इट दैट यू ऐड और व्हाट इज इट दैट यू डू डिफरेंट दैट द टेस्ट इज सो मच एनहांस्ड। सो देयर आर 3 key things that I do different, that I think that enhances or gives that heightened flavor for this basic and simple dish. The boiled potatoes consistency. Make sure that the potatoes are not submerged in the water. Water should not be even half the level, it should be less than half of the potatoes. Make sure that the flame is not in high, but it should be in the medium. It should be cooked until you get just 2 whistles. Add 2 tablespoons of oil in a hot pan. I prefer to use mustard oil, sesame oil, olive oil, coconut oil. These are supposed to be healthy oils, but it's up to you what you want to use. Abhi we'll add all our tadka ingredients. We have urad dal, chana dal, mustard seeds and jeera. To make my cooking simpler and easy, I mix all these tadka ingredients for certain recipes and I keep them in one box. It makes my life easy. Add curry patta and green chilies. फिर हिंग डाल दो। अब मेरे इस रेसिपी का दूसरा की पॉइंट है ऑनियन का क्वांटिटी एंड हाउ आई स्लाइस द ऑनियन। सो मैं 5 मीडियम साइज पोटैटो के लिए एक बड़ा सा ऑनियन लेती हूँ। ऑनियन का क्वांटिटी ज्यादा डालने की वजह से एंड ऑनियन को इस तरह लॉन्ग स्लाइस करने की वजह से ऑनियन का फ्लेवर थोड़ा ज्यादा आता है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगर आपको ये डिश पसंद आता है तो डेफिनेटली लाइक करिए, शेयर कीजिए। Now mix all these thoroughly and add half teaspoon of salt. Third key flavor enhancer, which is grated ginger and grated garlic. Add in almost 1.5 tablespoon of grated ginger and garlic. थोड़ा सा हल्दी डालो, रेड मिर्ची, अब बॉइल्ड पोटैटोस डालने की बारी आ गई। पोटैटोस को ऐसे बड़े बड़े चंक्स में डाइस करना। पोटैटोस आर वेरी हेल्दी। पोटैटोस हैव सो मेनी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. It also has so many micronutrients. Of course, it has high carbs, but when you portion control and eat it, you will get many essential micronutrients which are very essential for the body. Add more salt, around 3/4 teaspoon to 1 teaspoon. Gently mix the ingredient and add chopped coriander and serve it into a bowl. आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करना, डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगा। इफ यू लाइक इट, डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।